Good morning, students. Hope you all are fine. This is Minakshi, your biology teacher. Yesterday we have discussed about the 10% law and what are the various impact on the ecosystem and environment because of human beings, isn't it? Okay. So, today we're going to discuss about the managing the garbage we produce. We know that what is garbage? Garbage, any rubbish or household waste, you can say, isn't it? Every household produces a lot of garbage, or you can say ki waste on the daily basis. So this garbage include fruit and vegetable peels, fallen leaves of the plant, waste paper, unwanted plastic objects, glass articles, metal objects, isn't it? And sewage which is being generated from the homes, and some of the garbage, you can say, if you characterize this waste into two different category. So one could be your biodegradable and other would be non-biodegradable, isn't it? You can say कि अब इतना वेस्ट घर में जनरेट होता है तो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इट this waste, isn't it? So there are some important modes of waste disposal, so you can dispose this waste in a scientific way, isn't it? The first one you can say in managing the waste is the recycling process. So hope you have heard about the 3R mechanism, isn't it? 3R means recycle, reuse and reduce, isn't it? Recycling means the solid waste like paper, plastic, metals, they can be recycled. For example, waste paper is sent to the paper mills. The kabadi wala will come and collect the waste paper from your homes, isn't it? So it will give this paper to the papers mill where it is reprocessed to form a new paper again, isn't it? And even the kabadi wala will take the plastic articles from your home like bag, buckets, chairs which have been broken, bowls, cups. So it will be sent to the plastic processing factories where they are melted and remolded to make the new articles, isn't it? This is called recycling. And next is the preparation of the compost. Yes. This is the second way to manage the waste. You can say biodegradable domestic waste such as fruit, vegetable peels, leaves of plants. They can be converted into useful compost by burying all this waste into a pit, into the ground, which can be used as a manure. You know what is compost, isn't it? So if you put all this waste, which is biodegradable waste, in the soil in a pit, so after 1 to 2 months you will get a compost which can be used as manure. Okay? So next one is incineration. So incineration means reduces to ashes. What do you mean by ash? Ash is nothing but rock, है ना? जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो जो हमें लेफ्ट ओवर मिलता है दैट वी यूज टू कॉल इज ऐश. सो इंसिनरेशन मीन्स रिड्यूसिंग टू एशेज. सो यू कैन से द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर, यू कैन से more than 1000 degrees Celsius. So to form ash is called incineration. So this incineration can be used to destroy any household waste, chemical waste or biological waste, right? So you can say the very most useful, you can say hospital waste is which is generated in the hospitals, they can be incinerated. Okay? So next one is landfilling. So we have discussed till now recycling, number 2 preparation of compost, number 3 incineration, and number 4 is now landfilling. So landfilling, what we will do actually, whatever the waste is generated, the municipality truck will come to collect the waste. So it will take this waste to the low lying areas. You can see low lying areas of the ground where this waste can be covered with the soil, and this is known as landfilling. So disposal of waste by putting it in low lying area of the ground and covering it with the earth, or you can say soil, is known as landfilling. So most of the solid waste in urban areas basically, ठीक है, अर्बन एरियाज जो सिटीज़ है हमारी, वहाँ पर इस तरह से वेस्ट को डंप किया जाता है जो ढलान वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, उनका भरत करने के लिए. सो दैट विल बी कवर्ड विद द सॉइल टू लेवल द
अनइवन ग्राउंड. सो यू कैन से जो बड़ी बड़ी लैंड फिलिंग जो साइट होती हैं वो शहर से थोड़ा दूर होती हैं. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट इज द नंबर 5 इज द सीवेज ट्रीटमेंट. सो आपके घरों से जो गंदा पानी निकलता है जिसमें यूरिन और फीसेज यानी पॉटी वेस्ट जो होता है विच इज़ कैरिड फ्रॉम आवर होम टू द अंडरग्राउंड पाइप्स, जिसको हम बोलते हैं सीवेज, इजंट इट. तो ये जो सीवेज है इसको हम रिवर्स में या किसी भी वाटर बॉडी में तो नहीं डाल सकते, क्यों? बिकॉज योर वेस्ट कंटेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो इट कैन पॉल्यूट द वाटर बॉडीज, इजंट इट. सो इट विल बी affecting our life also. So sewage is disposed of by treating in a sewage treatment plant. आपके घरों से जो सीवर पाइपलाइंस निकलती हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचती हैं, वहाँ पे इसको कलेक्ट किया जाता है और फिर ट्रीट किया जाता है. और द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्रोड्यूसेस क्लीन वाटर विच इज डिस्चार्ज इन टू द रिवर और दैट कैन बी यूज फॉर मैनी अदर पर्पसेस. ठीक है. सो बेसिकली सीवेज के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है एंड दिस ऑर्गेनिक मैटर, इवन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोड भी बहुत ज़्यादा होता है. सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया जाता है. ठीक है. और उससे फिर यू कैन से बायोगैस भी जनरेट की जाती है, मैन्योर भी जनरेट किया जाता है. तो बहुत सारे फ़ायदे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट वी हैव डिस्कस्ड इन मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. सो next, think it over. You can look it here. Think it over. So disposable cups in the train. So if you ask your parent, they will probably remember a time when tea in train was served in plastic glasses which had turned to be more vendor. अब प्लास्टिक वेस्ट को, इतने सारे प्लास्टिक वेस्ट को एक्चुअली मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि प्लास्टिक के कप्स में इवन इट इज़ हार्मफुल बिकॉज प्लास्टिक बर्न पे हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है. सो उसको मद्देनज़र देखते हुए कि उसको मैनेज करना मुश्किल था, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल कप वाज हेल्ड एज अ स्टेप फॉरवर्ड टू द रीजन ऑफ हाइजीन. तो अभी डिस्पोजेबल कप्स आते हैं तो एज अ रीजन फॉर द हाइजीन वी हैव यूज द डिस्पोजेबल कप्स. नो वन एट दैट टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट कॉज बाय द डिस्पोजल ऑफ मिलियन ऑफ दीज कप्स ऑन अ डेली बेसिस, इजंट इट. सो सम टाइम बैक कुल्हड़, दैट इज़ डिस्पोजेबल कप मेड ऑफ क्ले. आपने देखा होगा वो आजकल कसोरे होते हैं चाय के, उन मिट्टी के, उनमें चाय सर्व की जाती थी पहले. तो उसको भी हमने एज अ अल्टरनेटिव यूज़ किया था. लेकिन इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये था कि ये जो कुल्हड़ हम बनाते हैं इसमें हमारी जो फर्टाइल टॉप सॉइल है ना वो लॉस हो रही थी. चिकनी मिट्टी यूज़ होती है ना इनको बनाने के लिए. सो देयर वाज अ ड्रॉबैक दैट अ लार्ज स्केल वुड बी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल. So disposable paper cups are being used. ठीक है बेटा. So you can say what you think are the advantage of disposable paper cups over the disposable plastic cups. So you can very well answer this question, isn't it? Paper cups जो है वो biodegradable है. So even if the paper cups are thrown away after use, they will decompose automatically by the action of microorganism due to course of time, isn't it? And you can say on the other hand, if you say plastic cups, they are non-biodegradable. They remain in the environment as such and pollute the environment. And second thing is paper cups can even be disposed by burning without causing much air pollution, isn't it? And burning of plastic cup produces toxic gases that will cause too much of air pollution because harmful gases will release after burning the plastic, isn't it? So that's all about this chapter we have discussed. And next I will send you the NCERT questions, so please make a note of in your fair notebooks so that it will be easy for you to study at the time of examination, isn't it? So hope you all are fine and you have learned some basic things from this chapter that we should conserve our environment, isn't it? So do not pollute the environment. Don't throw plastic bags and plastic polythene bags over here and there. Just dispose it in a right way. That green bin is being used to dispose the biodegradable waste and blue bin is being used to decompose, or you can say dispose non-biodegradable waste. Am I clear to you? So guys, protect our environment because we are the part of it. So ultimately nature will give its drawback if we continue to harm it, isn't it? So that's all for today. So hope you have enjoyed my lecture. See you. Tata. Stay home. Stay safe.